Hello students, Jai Swaminarayan. Welcome to BAP Swaminarayan Vidya Mandir. Today we are going to learn our tree, standard second English. The chapter name, poem name is Our Tree, right? So let's solve the second part of this chapter. Okay, let's do the activity. Let's think. Put a tick mark yes if it is true and put a cross if it is not true. Okay, do it yourself this activity in your textbook. आपको आपके हिसाब से टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करना है, ठीक है. आई लाइक फ्रूट्स, अगर आपको पसंद है तो ट्रू पे टिक मार्क कीजिए और नॉट सो देन क्रॉस. देन आई लाइक फ्लावर्स, सो ट्रू है तो टिक मार्क कीजिए, नॉट सो कैंसिल इट. देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, आपकी नियर बाय कोई ट्री है, अगर है यस इट्स अ ट्रू सो करेक्ट, एंड इफ इट इज नॉट देन क्रॉस. द ट्री हैज फ्लावर्स, जो आपके घर के नियर बाय ट्री है उसके ऊपर फ्लावर्स है, सो इफ इट इज यस देन टिक मार्क ट्रू एंड इफ इट इज नॉट देन टिक मार्क क्रॉस. द ट्री हैज फ्रूट, अब नियर बाय जो ट्री है उसमें फ्रूट्स है, सो यस और नो देन क्रॉस इट. ओके, डू इट योर सेल्फ. नेक्स्ट, लेट्स रीड एंड राइट. WXYZ, trace it. Okay, for your good handwriting. Next, help the bird reach its nest. Let's do that. Do it these things. Help the bird to reach its nest. Okay, let's see. Go first here from this way to here. Then you reach the nest. It's a fun game. Do it yourself. Okay. Let's read it. Can you climb a tree? मतलब आप ट्री के ऊपर चढ़ सकते हो. कैन यू क्लाइंब अ ट्री? यस आई कैन क्लाइंब. वैसे ही आप क्वेश्चंस बना सकते हो. कैन यू प्लक अ फ्रूट? यस आई कैन प्लक, मतलब आप फ्रूट्स प्लक मतलब तोड़ सकते हो तो यस. देन आप ऐसे भी कह सकते हो कैन यू कैच द बॉल? यस आई कैन कैच द बॉल. और कैन यू जंप फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप? Yes, I can jump from the first step, right? Let's do. The next is Murli's mango tree. Listen, read, and enjoy the story. Let's see. One day, Murli ate a mango. He threw the seed behind his house. एक दिन मुरली ने क्या खाया? मैंगो खाया. He threw the seed behind his house. उसने सीड को कहाँ फेंक दिया? उसके घर के पीछे. Many months later, मतलब कुछ महीनों के बाद, he saw a plant. उसने क्या देखा? एक प्लांट देखा छोटा सा. He watered the plant every day. उसने क्या किया? वो प्लांट को पानी पिलाया रोज. The plant grew into a big mango tree. प्लांट किस में ग्रो होने लगा? एक बिग मैंगो ट्री बन गया, राइट. Every summer many mangoes grow on it. Now Murli's children ate the mangoes. मतलब क्या हुआ? Every summer मतलब जब समर सीजन में मैंगोज आते हैं तो मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट, मतलब बहुत सारे मैंगोज आने लगे समर सीजन में. नाउ मुरलीज चिल्ड्रन एट द मैंगोज. अब तो मुरली बड़ा हो गया और उसके चिल्ड्रंस भी क्या कर रहे थे? वो मैंगोज खा रहे थे. मतलब मैंगो का ट्री, मतलब उसने जो थ्रो किया था सीड, मैंगो सीड, उसमें से क्या बन गया? एक बड़ा सा ट्री बन गया, राइट. लेट्स गो. रीड द सेंटेंस एंड टेक द करेक्ट द राइट पिक्चर. चलिए कंप्लीट करते हैं. मुरली एट बनाना मैंगो वन डे. विच फ्रूट एट मुरली? मुरली एट मैंगो, राइट. सो टिक मार्क ऑन मैंगो. मुरली एट अ मैंगो वन डे. ही थ्रू द सीड मैंगो बिहाइंड हिज हाउस. What he threw? He threw the seed behind his house, right. Next, many months later he saw a seed or plant. What he saw? He saw plant. He watered the seed plant every day. So he watered the plant every day. मतलब पानी किसे पिला रहा था वो? प्लांट को. Many apples or mangoes grow on the tree. मैंगो ट्रीज के ऊपर कौन से फ्रूट्स आते हैं? मैंगोज, राइट. So many mangoes grew on the tree, right. Let's go ahead, आगे देखते हैं. Now draw a tree showing leaves, branches, fruits, birds, nest and a swing. मतलब आपके हिसाब से आपको जो भी ट्री पसंद है वो ट्री आपको ड्रॉ करना है. ड्रॉ अ ट्री
showing leaves, उसके leaves दिखाने हैं, branches दिखाने हैं, fruit दिखाने हैं, birds, then nest and swing. Okay, let's stop. Describe the picture using all the words given above. Should tree be cut? हमें trees cut करनी चाहिए? No, we should not cut the trees because trees are our best friends. It gives what it gives? It gives pure air, right? Air, fruit, shelter, then so many things, flowers, medicines we get from tree. Name some trees which you have seen. आपने कौन से trees देखे? So mango trees है, banyan tree है, neem tree है, right? There are so many trees that I have seen. Okay, I hope you all are enjoying this lecture. Thank you. Do it yourself, this exercise. Okay, it's too easy to do it yourself. Thank you. Jai Swaminarayan.